Thank you so much for having me here, first of all. And I'm glad to be here sharing today a few of my thoughts with the people in our community. And as you rightly said, the topic today is how to succeed in stock market, right? So all of us come here with a lot many expectations and a lot many dreams, lot many desires, lot many fancies too at times, you know. And we all have our own different experiences in the market, in the time zone that we spend over here. And at times the market meets our expectations in no time. And at times we find it difficult to make our mark in this line, even after much of time and much of struggle. So today my aim, my intention over here is to share with you people some of the thoughts of mine regarding why does it happen. If it so happens that market doesn't meet our expectations, then why does it happen? And if it meets our expectations, if it actually gives us the required success in terms of name, fame, satisfaction, everything, then why does that happen too? Right? So I'll share a few of my general thoughts on the market and some of my realizations that I have learned, the lessons that I have learned across during my journey over here of more than 1.5 decades now. So and thereafter we'll take some particular indicator and learn some details about that indicator and try to create a trading system that can be used by short-term as well as medium-term and long-term players in the market using that indicator. So that is how this entire session is planned, and let's get going with that. So a bit about me, as I've been introduced, my name is RACHANA VAIDYA, you already know that. And I am myself a full-time trader. I trade in futures mainly. And I'm also a coach. I train people in technical analysis. And I'm also a regular panelist on CNBC AWAAZ, the #1 Hindi business news channel in our country. And I've also studied a lot in this line. And as you can see, I'm contactable, approachable at all these social media details and on my number and everything. And with this, I'll move on to the first topic that we'd like to cover today: ways to manage markets. So one thing is very much clear: it doesn't matter whether you use. One thing I wanted to ask before I proceed. Can I just know which is the language that you people will be more comfortable with? Should it be Hindi, more of English, or you want me to keep it a combination of both? If you people could clarify it to the organizer. I'm getting a one. You can use both the language. People are writing use both the language. Both the language. So it should be a combination of Hindi and English both. Yes, ma'am. All right. So doesn't matter हम चाहे फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें चाहे हम टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करें, पर एक चीज हमने बहुत बार एक्सपीरियंस करी है. Most of us have been through this. One thing that we all have experienced, no matter what is our methodology, market at times हमने ये देखा है कि रोज कुछ ना कुछ सेक्टर, कुछ ना कुछ स्टॉक्स, कोई ना कोई कंपनीज रोज ऐसी होती है मार्केट में which moves in a very nice way. से फॉर एग्जांपल आज मारुति था, कल कुछ और था, कल कुछ और था, रोज कुछ ना कुछ चलता है. लेकिन बात ये होती है बहुत बार कि हमने जहां पे पैसा लगाया, जिस टाइम पे, जिस दिन को, जिस सीजन में, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, जिस क्वार्टर में, इफ यू आर अ मीडियम टर्म प्लेयर, तो बहुत बार हमारा ये एक्सपीरियंस रहता है कि हम जहां पे पैसा लगाते हैं वो स्टॉक उस दिन को, उस सीजन को या उस साल को थोड़ा कम चले हो सकता है, और कुछ ना कुछ चल रहा है जहां पे हम नहीं है, और जहां पे हम हैं वो थोड़ा अटका हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स द मोमेंट वी एग्जिट द स्टॉक, उसके बाद वो जरूर चलेगा. यू नो, ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी एट सम स्टेज और द अदर हुआ है. तो इससे क्या पता चलता है? इससे एक चीज पता चलती है कि चलता सब कुछ है मार्केट में, कोई चीज आज चलेगी, कोई चीज कल चलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चीज तभी चले जब हमने एंट्री किया.
You know, it is not important for the stock to move at the same time when we were there in the stock. तो वो एक पुराने पिक्चर का एक पुराना पिक्चर था ना, हिंदी मूवी आहिस्ता आहिस्ता, उसका एक गाना था, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे शेयर बाजार में भी ऐसा नहीं कि पैसा ना हो. द प्रॉब्लम इज दैट जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता, कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. We all have been through this at times, you know. So why does this happen? What is it that is going wrong and where is it that it is going wrong? पहली बात तो ये है कि मार्केट में पैसा लगाने से सक्सेस नहीं मिल जाती. अगर इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बन जाता तो सबका बनना चाहिए था. Everybody should be successful, right? But it doesn't happen that way. And वो जो ऊपर बैठा है ना, वो इतनी आसान भी नहीं बनाता जिंदगी. He doesn't make it that easy for everyone. So it is to be seen कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, आपका पैसा आपके पैसे लगाने से नहीं बनता. आपका प्रॉफिट तब बनता है जब आपके बाद आने वाला इंसान, आपके बाद आने वाला मार्केट प्लेयर उसी डायरेक्शन में पैसे लगाए जहां पे आपने लगाया है. अगर आपने बाय किया है तो द प्लेयर्स हु कम आफ्टर यू शुड आल्सो बी पुटिंग हिज मनी और हर मनी इन द लॉन्ग साइड. तब कहीं जाके स्टॉक विल मूव फर्दर आफ्टर योर एंट्री एंड दैट इज व्हेन यू विल अर्न मनी. तो पैसा तो किसी और के पैसे लगाने से बना, राइट? सिमिलरली ऑन द शॉर्ट साइड. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम जब भी कहीं पे भी पोजीशन बनाए, लॉन्ग साइड चाहे शॉर्ट साइड, वी शुड नॉट बी द लास्ट वन इन क्यू. अगर हम वो आखिरी इंसान है जो पैसा लगाते हैं on one particular stock in one direction at one price level, and if there is nobody investing in the same direction in the same stock after us, then we are into trouble, right? In that case हमें retracement face करनी पड़ सकती है. तो कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट. एंड क्योंकि टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, आप लास्ट नहीं होने चाहिए क्यू में. इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज वन थिंग जो आपको टाइमिंग के लिए बहुत एक्यूरेटली हेल्प करता है. और अगर आपकी एंट्री टाइमली है, आप दूसरे लोगों से आगे है, यू आर द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, then you are neither going to be stuck into accumulation, which is very frustrating, nor you are going to be the last one in the queue, in which case you can get trapped if the other people start investing money on the other side. And on the third side, you are not even going to exit very early if you are focusing on technical analysis, because if you after your entry अगर आप जल्दी निकल जाएंगे किसी स्टॉक में से और बाद में अगर वो स्टॉक चलेगा तो भी पछतावा होगा that you left a lot of money on the table for the next guy. And on the other side, अगर नहीं निकले और अगर स्टॉक रिट्रेस करेगा तो भी पछतावा होगा, because you overstayed your welcome and you maybe gave away a part of your profits, right? तो ये सारी जो कश्मकश है ना, इसका एक ही उपाय है, that your entry should be well timed, your exit should be well timed, and your stock should be rightly selected, ताकि आप जहाँ पे है वही चीजें चले और आपके फेवर में चले, राइट? सो मार्केट में वैसे देखा जाए तो दो तरीके के लोग होते हैं. एक वो जिनको ये सब चीजें मालूम नहीं है, और उनको वो भी नहीं मालूम कि दे डोंट नो इट. उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम कि उनको नहीं मालूम. दे डोंट नो एंड दे डोंट नो दैट दे डोंट नो. एंड ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल जिनको अगर नहीं भी आती है ये सब टेक्निक्स, कम से कम उनको इतना पता है कि कुछ है जो हमें नहीं मालूम. There is something to learn. They know that, right? So if you people, which I am sure you are amongst those who know that there is something to know about the market, there is something to learn about the market, and there is something to do about the market with a know-how, with an expertise, then you definitely have an edge over those people जिनको कुछ नहीं पता, जो ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही आ जाएंगे, पैसे लगाएंगे और बैठे बिठाए मार्केट हम पे बारिश बरसा देगा, right? So congratulations to you, me, and to all of us who know that there is something to learn, and that is why we have these programs like the one that we have today, right? And it is always nice to learn before you earn. It is always nice to invest in yourself before you invest in market. It is your time, your attention, your energy levels, and your expertise that you are investing in before you invest your money in the market. क्योंकि सिर्फ पैसा लगाने से पैसा बन नहीं जाता, राइट? एंड मार्केट में जीतने के बहुत सारे तरीके होते हैं. देयर आर वेरी मेनी वेज टू हैंडल योर मनी.
One is that you do your own research and you handle your funds by your own way. The other is that you get it done by somebody else, maybe through a PMS or something like that. Or there are also people who do absolutely nothing after putting in the money and they directly go into hibernation, भूल जाते हैं and बरसों तक रखते हैं एक पोजीशन को, बाद में देखते हैं, right? बुरा किसी चीज में कुछ नहीं है, but the thing to understand is this, that even if you're making money as a buy and hold investor, even if you're making money, अगर buy and hold के बदले अगर आप actively invest और positions बनाए as a short term player or as a long term player, if you actively trade or actively invest, तो आपका जो rate of return होगा ना वो बहुत अलग होगा, right? Your ROI will be different, and so there is much sense in learning what you have to do ahead, right? So with this we move to the next thing, the type of markets. So अगर type of market की बात करें, हमने बहुत बार ये तो सुना ही होता है कि there are two kinds of markets. One is the sideways market and the other is trending market, and most of us know these things. लेकिन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि मार्केट में साइडवेज किसको प्ले करना चाहिए, कब करना चाहिए, और दूसरी बात कि ट्रेंडिंग मार्केट में कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, और तीसरी कौन सी तरीके की मार्केट है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं करी जाती. So this is what I'm going to share with you over here. Point number one, if you are an index player, if you are a person who like to play indices, then focusing on a sideways market and trying to gain an expertise in such a market is very, very useful for you. Why? Because indices have got a huge tendency to get into sideways mode every now and then. You know, चार स्टॉक ऊपर खींचते हैं, चार नीचे खींचते हैं, एज अ रिजल्ट गए तो कहाँ गए, वो sideways ही होके रह जाता है. Broad level index, there could be sharper moves in the individual stocks, but the overall index might be remaining sideways. So if you are amongst those who like to make money from the Nifty or Bank Nifty as an index, then sideways market and an expertise into that is very important for you. Point number two, in a sideways market, it is always wise to enter only and only at the boundaries and not in the center of the range, right? So center of the range में अगर आप enter करने की कोशिश करते हो on either of the sides, तो the probability of going on both the side is equal. हमें कैसी positions चाहिए, ऐसी चाहिए जहाँ पे हमें edge मिले माने the chances of going in our favor are more than the chances of going it against us. ऐसा कहाँ पे होगा, ऐसा boundaries पे होगा, right? तो अगर साइडवेज मार्केट आप पसंद करते हैं, उसको अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें सेंटर में एंटर ना करें, जब तक बाउंड्री पे प्राइस ना आए तब तक पेशेंस दिखाएं. इट्स ऑल अबाउट शोइंग पेशेंस, राइट? till the time the price comes at the right level. On the other side, one more point, अगर साइडवेज मार्केट आप ट्रेड करते हैं तो नैरो, मतलब इतनी नैरो रेंज नहीं होनी चाहिए that you hardly is left with any profits after removing your taxes and commissions and brokerages. Right? So choose your market wisely, and these are the points जहाँ पे हम बहुत often falter कर जाते हैं, and that is why despite of having a very good indicator at times हम पैसे नहीं बना पाते. So because we are discussing over here how to succeed in the stock market, तो मेरा ये मानना है कि इंडिकेटर वगैरह सब बहुत बढ़िया बात है, but खाली इंडिकेटर से नहीं जीता जा सकता. You know, ये जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसको अगर हम करेक्ट कर सकते हैं, इसको अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इट मेक्स अ लॉन्ग difference, a huge difference. It takes us a long way in making a difference in our P&L statement. ये यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर के दो डॉट्स देख रहे हैं ना, बहुत बार लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर करेक्शन आ रहा है तो उससे डरिए नहीं, होल्ड ऑन टू योर स्टॉक्स इवन इफ इट इज गोइंग डीपर अगेंस्ट यू. लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट मैम, सॉरी, जस्ट वन सेकेंड मैम, आप एक बार आपका पीपीटी फॉरवर्ड मूव या आगे पीछे एक बार करके देखिए, बिकॉज इट्स स्टक देयर. can you see the schematic diagrams of the kind of markets that I'm talking about? No ma'am, no ma'am. Do one thing, you can disable your screen sharing one and enable it once again. Okay. Now I'm sharing it one more time. Yeah.
Yeah, now it's The clear. slide that is open is market types. Can you see the market Yeah, types? yeah, it's visible now. Yeah, All right. So over here, do you see this market which is actually coming down, and there are three green colored circles which I have marked on the chart, right? So at times what happens is कि अगर हम long term player भी है, कोई चीज हमारे against जा रही है, and we don't understand the difference between a retracement and a correction, a retracement and a reversal, a retracement and a carnage. तो ये हो जाता है कि we end up holding on to positions which are totally going against us. पूरा reversal हो चुका है market का, और लंबे टाइम बाद, after many months or sometimes even many years, the price may come back again after so much of patience. If it comes at circle number 2, the second green circle on the right hand side of your slide, then you see after all the holding period, the price has risen so much from the lower levels, but it has still brought you only to a neutral level. You are still not in profits despite of all the pullback from the lower levels. तो ऐसे में गलतियां ना करनी चाहिए. Otherwise, अगर ऐसी गलती करते हैं that you are not able to differentiate between a correction and a carnage, तो आप समझ लीजिए corrections को buy कर सकते हैं लेकिन carnage को नहीं कर सकते. Right? Even after holding on for years, you may be stuck with the same stock which is just approaching the same level after all your patience that you have shown over many years. तो ऐसी चीजें अगर होती हुई नजर आए तो आपको समझ लेना चाहिए that there is something that you don't know about the market and there is a requirement for in-depth learning. Right? Now I'm changing my slide to the next slide. I hope everybody can see. So it is basically like this, as you can see over here. जैसे वो डियर जिंदगी मूवी में शाहरुख खान कहता है ना आलिया भट्ट को कि अगर आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आप अपने हाथ में नहीं लेंगे तो ड्राइवर सीट पे कोई और बैठ जाएगा. You know, it is the same about markets also. अगर आप अपने प्रॉफिट की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेंगे तो किसी और पे आप अगर 100% डिपेंड करने लगेंगे, not making any efforts from your side, then पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है, तो जिम्मेदारी भी कहीं आपकी बननी चाहिए ना. अगर वो नहीं करेंगे, ड्राइवर सीट पे किसी और को बिठा देंगे, तो वो बात नहीं है प्रॉफिट्स में भी और सेटिस्फैक्शन में भी, जो तब होती है जब हम अपनी चीज को खुद कंट्रोल करना सीखें और अपनी सक्सेस को खुद से राइड करना सीखें. राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. I hope the slide transition is now smooth enough for everyone to follow. The slide that I'm now showing you says the facts that help you succeed. yeah, it's visible. Right. So the thing is that even as a long-term player, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो हर जगह आपको नहीं सुनाई देगी. पर ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे थॉट पैटर्न्स है. डाइवर्सिफिकेशन के लिए एवरीबडी भी यू विल बी फाइंडिंग पीपल टेलिंग यू कि डाइवर्सिफाई करिए रिस्क को तो यू विल बी सेफर. बट अगेन आई हैव सम लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन थॉट्स. मैं ये मानती हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए. यू शुड नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि खाली डाइवर्सिफिकेशन करने से you are safe enough and you can forget the rest of the things and the universe will take care of you, then maybe you are mistaken. Right? एक सही पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स का भी एक सही पोर्टफोलियो वो होता है जहां पे डाइवर्सिफिकेशन को एक लिमिट पे रखा जाए. Otherwise diversification is a hedge only against ignorance and nothing else. Right? तो कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्सिफाई करें लेकिन एक लिमिट में करें. इतने स्टॉक्स ना इकट्ठा कर ले अपने पोर्टफोलियो में कि एक जगह से अगर प्रॉफिट बनता है 4 स्टॉक्स में से तो वो सामने 4 स्टॉक ऐसे निकलेंगे which are not performing up to the mark and they'll drain all your profits into the drainage. Right? तो हम डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं करते कि ऑन एन एवरेज सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए, कीपिंग अस एग्जैक्टली वेयर वी वर. Rather than that, if you can diversify only up to a certain limit and focus your money more on the names which are performing and taking an exit from the non-performers, removing your funds from the non-performers rather than letting them take away the profits of the winners. If you shut them off from your portfolio, if you can remove them, then you can make a bigger money. Right?
थोड़ी मेहनत होती है इन चीजों के लिए। करना क्या पड़ता है, थोड़े थोड़े टाइम पे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ता है, नॉट डेली ऑब्वियसली, बट एट अ रेगुलर इंटरवल, राइट। तो अगर ये इतनी सी थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर ले और विनर्स को राइड करने दे और लूजर्स को कट करते जाए, इतना सा फोकस अपना पैसा वहां पे लगाए जो विनर घोड़ा है, यू नो, विनर पे अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे, उतना फोकस अगर कर लेंगे, तो हमारी आरओआई में अगेन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। So two things which are important, one is your timing and the other is your concentration. Certain amount of concentration is required, even as a short-term trader, even as a long-term player. Diversification has its own limit and it is better kept within that limit, right? Otherwise, it will keep on eating away the profits that you are making from your winners, right? The third thing is it's a volume game. What should matter to you is the rate of return. अपने पर लॉट कितना पैसा बनाया। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेयर है, कितने लाख बनाया, कितने करोड़ बनाए, वो बात की बात है। पर लॉट कितना बनाया। अगर आप पर लॉट 1500-2000 में निकल जाते हैं, तो बहुत चांसेस है कि किसी खराब दिन पे आपका बहुत सारा पैसा मार्केट एक साथ लेके जा सकता है। बट यू नो, इफ यू कैन फाइंड स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ जहां पे आप पर लॉट 5000 के ऊपर बनाए, 10,000 के ऊपर बना पाए, तो your P&L statement will start having a different shade of green altogether, right? तो वॉल्यूम पे फोकस करने से पहले रेट ऑफ रिटर्न पे फोकस करें, क्योंकि फाइनेंशियल रिटर्न्स हमेशा परसेंटेज में गिने जाने चाहिए। तो पर लॉट कितना बना, ये आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। And as I rightly told you, know-how is very important. So if you will make some attempts to learn the game, then you will definitely play it in a better fashion. रिस्क मैनेजमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए इफ यू रियली वांट टू सक्सीड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए पैसा नहीं बनता, और अगर करेंगे तो मजा भी उतना आएगा। ये पैसा चीज ही ऐसी है, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, हमें लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, तो होती है लक्ष्मी, एक्चुअली चंचल होती है, आ तो जाएगी एक दिन, लेकिन फिर आने के बाद कितनी भी तो चाहिए ना, राइट। तो ये पैसा चीज ही ऐसी है। और जैसे बॉलीवुड में भी कहा है, ऋषि कपूर जी का एक पुराना गाना है, पैसा ये पैसा कैसा है पैसा, ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत, यू नो। तो पैसा ना हो तो एक तरीके की मुसीबतें हैं लाइफ में, अगर हो तो कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये एक अलग मुसीबत है लाइफ की, पर ये अच्छी वाली मुसीबत है। सो इट शुड बी एन एंजॉयबल राइड, राइट। एंड शॉर्टर टर्म में भी बहुत लोगों के माइंड में होती है चीजें कि क्या शॉर्ट टर्म में प्रोबेबिलिटीज है पैसा बनाने की, अगर है तो कितनी है। तो ये चीज के लिए मैं बताना चाहूंगी कि पिछले कितने टाइम से, जब से मैं मीडिया पे आ रही हूँ, बहुत सारी बार ये चीज करके दिखाई है कि इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू मेक 5 डिजिट अर्निंग्स इवन पर लॉट एज ए शॉर्ट टर्म प्लेयर, यू नो। एंड दिस इज वन ऑफ सच वीडियो क्लिप्स। ऐसी बहुत सारी है कॉल्स, पर आप इनको सुने, मे बी यू विल come to know कि क्या कैसे चीजें रीड करना पॉसिबल है, and which are the kind of possibilities that you can have in a market even as a short term player. I hope this works. और दूसरे स्टॉक में इंडियन हाउसिंग फाइनेंस जिसने पिछले आधे घंटे में बड़ी तेज मार क्रिएट हुई है, तो और हाइलाइटेड चार्ट में इसमें लग रहा है कि डेली चार्ट में 200 के आसपास एक बड़ी हैंडल बनाने की मूड में है, तो उसमें उसने 176 के आसपास ऐसे लगा के आप 186 के टारगेट की This was a BTST call. I think it was given around 2:30 p.m. in the last hour show on media. And see how the chart actually moved in the next morning. You see 182 के करीब था, और अगर डिप आता है तो भी बाइंग करनी चाहिए, अगर पोजीशन ऑलरेडी है तो भी बने रहना चाहिए। 176 जब तक सस्टेन करेगा ये, तो 186 की तरफ वो जा सकता है। मल्टीपल डे के हिसाब से ऑब्वियसली इट कैन गो फर्दर आल्सो। नाउ यू लुक एट दिस चार्ट, ज्यादातर लोग, हम चाहे कोई भी सिस्टम यहाँ पे शेयर करें आपके साथ, लेकिन ज्यादातर आप लोग सब चार्ट्स को समझते हैं, and that is why you are here. So look at this, the opening on the next morning was very strong and the prices did not make any retracement on that particular morning. अगले दिन का क्लोजिंग जो है वो हाई पे हुआ था, और ये 25 नवंबर 2020 की बात है। दिस इज एन इंट्राडे चार्ट, एंड यहाँ पे आपने देखा होगा कि खुल
खुलने के बाद सीधा प्राइस जो है वो 190 को भी क्रॉस कर लेता है, 95, 96 की तरफ जाता है, यू नो। सो सच इज द पॉसिबिलिटी, इंट्राडे में भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि आप 182 से 96 तक का मूव इंट्राडे में राइड कर लें। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि कितना हो सकता है, कहां तक का हो सकता है काम, तो कहने का मतलब ये है कि द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। If you know how to pick your stocks rightly and if you know how to enter and time your trades well, तो possibilities का कोई end नहीं है यहाँ पे, right? This is again one such thing जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगी यहाँ पे, and this was a call in Maruti. You will see the difference. कैसे एक well chosen stock में move कभी रुकता नहीं है, goes on and on. So there is no upper limit to a possibility that a short-term player can even have in the stock market. Listen. आज के लिए मोटिवेशन आइडिया जो मानती है और हमने काफी टाइम बाद हमारा मोटिवेशन भी क्या है पिछले कुछ दिनों में हम तो थोड़ा और फिर हम जरूर पहले इसके फीचर्स हैं और अगर डेली चार्ट पे देखें तो अभी ये जो दिया है कल के दिन में बात हुई है तो वो दिनों की एक हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को ब्रेक करके काम कर रहा है वहां से। तो हम अब ये उम्मीद करके चले कि ये जो So 75 was a positional target, and you won't believe the next day the stock touched 7700. Do you see this intraday chart? Right? So थोड़े टाइम पहले की बात है ये, और इतनी मूवमेंट्स इंट्राडे में पॉसिबल है। सो पॉसिबिलिटीज की जहां तक बात है उसका कोई एंड नहीं है। बस बात यह है कि आपको अपने सिस्टम, अपना तरीका, अपने रूल्स, अपने डूज एंड अपने डोंट्स सब अच्छी तरह से पता होने चाहिए। So with this background, let's try to understand one particular indicator today, and the indicator that we have chosen for you today is Ichimoku trading system. And I'll explain to you what this indicator is all about. First, we'll see the indicator, the calculations of it, the parts of it, and thereafter we'll try to understand how to interpret this indicator. Thereafter, we'll try to create a trading strategy on it, and then we'll see some examples. Right? तो ये बेसिकली जो होता है इचिमोको इंडिकेटर, उसमें बहुत सारी लाइंस आपके चार्ट पे ड्रॉ करी जाती है on the top of the prices. This is an indicator which is plotted on the top of the price. It's an overlay kind of an indicator, right? Indicators like RSI and all are underlay indicators. They are displayed separately below the chart or above the chart. And there are indicators like Bollinger Bands and moving averages and even this Ichimoku, which are plotted right on the top of the price. So this is one of such indicators जहाँ पे 3-4-5 तरीके की lines दिखेगी आपको चार्ट में. Most of you might be even using it, or maybe some of you might be even very well versed with that. But nevertheless, there are some important lines in this chart. The first line is known as the conversion line or the fast line or the turning line. अब ये होती क्या है? आपके चार्ट पे जो भी कैंडल्स या बार्स या जो भी आप यूज करते हैं, उसके पास्ट 9 पीरियड का जो प्राइस है, उसका जो हाई एंड लो होता है, every day you take the high and the low of the price and you find out the midpoint of it. Like that, you go on finding the midpoint for 9 days and then you plot a line joining those 9 points. That is how you get a fast line or a conversion line or a turning line, right? तो ये जापानीज लैंग्वेज में इनके इन सब चीजों के नाम जो है वो थोड़े अलग अलग है, बट नेवरदलेस इसको कुछ 10 के सेन नाम से जाना जाता है, but it's not important. The name is not important. You can call it a fast line because it has the midpoint of the 9 period. There is another line which is the midpoint of 26 periods, which is known as the standard line or the baseline. It is the midpoint of the last 26 periods. You take the midpoint and you keep on plotting a line by joining those midpoints for 26 days. So you get the baseline or the standard line or the slow line, which is also known as the Kijun-sen line. And I am not even very comfortable pronouncing it in the Japanese language, but whatever it is basically the baseline or the standard line or the slow line, which is the 26 period midpoint. Now, if you also
take a midpoint of these two lines, the fast line and the slow line, then what you get is known as the leading span 1. You take the midpoint of the fast and the slow, the fast value plus the slow value divided by 2. Like that, you keep on doing it for every day, and that is where you get your leading span 1. Okay, and that is also a line which is plotted on the chart. I'll show it to you on the chart so you'll understand it more clearly as we proceed further. But first, some basic definitions. And then there is another line which is the leading span 2, or it is the 52 period midpoint which is plotted on the top of the price. So पिछले 52 days का जो प्राइस है उसका मिड पॉइंट अगर हम लेंगे और अगर इनको हम प्लॉट करेंगे तो उससे जो लाइन बनेगी वो लीडिंग लाइन 2 होगी. अब ये लीडिंग लाइन 1 एंड 2 की एक स्पेशलिटी है, बोथ ऑफ दीज आर प्लॉटेड 26 पीरियड्स फॉरवर्ड इन टाइम. तो आज का जो वैल्यू है वो आज के बदले 26 पीरियड्स अहेड इन टाइम प्लॉट किया जाता है. सो द फास्ट लाइन 9 पीरियड मिड पॉइंट, the slow line, the 26 period midpoint, right? The leading line 1, which is the midpoint of the fast and the slow, which is plotted 26 period forward. And then comes the leading line 2, which is 52 period midpoint. Sorry. And it is again plotted 26 period forward, right? इसके साथ में एक और लाइन होती है which is the lagging line. And now don't get overwhelmed with all these terminologies and all. It will become very simple, and it's my duty to make it simple as we move forward. So don't worry on that. There is another line, lagging span or the lagging line, which is nothing but the current market price plotted 26 periods behind. Now here we don't have any midpoint, no calculations, nothing. It's just the current price, but it is plotted 26 periods behind, and that is why we call it as a lagging line. Right? So now the 5 lines are the fast line, the slow line, the leading line 1, which is the midpoint of the fast and slow, the leading line 2, which is the midpoint of 52 period, fast and slow is of 9 and 26, leading 2 is of 52 period, and then you have your lagging line, which is just the current market price plotted 26 periods behind. तो इन सबको अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? This is how it will look like. Right? यहाँ पे, if you see this candles is the price. The pink line behind the candles, this line, it is the fast line. The blue line, which is a little behind, it is the slow line, which is the blue line. Okay. And the purple line over here that you see, this is the lagging line. This is the lagging line. So the fast line is the pink line, the slow line is the blue one, which is the fast is the 9 period midpoint, the slow is the 26 period midpoint, and this purple line, which is the lagging line, is current price plotted 26 periods behind. And the green and the red lines, the other two lines, when you join the two lines, or when you take the area between the two lines, leading line 1 and leading line 2, then if you color that area, what you get is known as the cloud. तो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड और कुछ नहीं होता. यहाँ पे ग्रीन लाइन की जो अपर लाइन है, दैट इज लीडिंग लाइन 1. ग्रीन क्लाउड की जो पीछे वाली लाइन है, दैट इज लीडिंग लाइन 2. इन दोनों के बीच का जो एरिया है, दैट इज नोन एज द क्लाउड. और अगर रेड क्लाउड भी देखेंगे तो जो ऊपर है दैट इज लाइन 2, जो नीचे है दैट इज लाइन 1, और दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हमने कलर किया, विच इज योर अगेन क्लाउड. क्लाउड क्या होता है? इट इज द एरिया बिटवीन द लीडिंग लाइन 1 एंड लीडिंग लाइन 2. दैट्स इट. ओके. अब ये क्लाउड जो है वो हमें क्या दिखाता है, बाकी की लाइंस क्या दिखाती है हमें, हाउ टू इंटरप्रेट दिस, वी विल सी इट एज वी मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ डज इट गेट इंटरप्रेटेड. नाउ ओवर हियर एज यू कैन सी, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, व्हेन द प्राइसेस आर एक्चुअली फॉलिंग, दैट इज व्हेन you will see that the price will remain below all the lines. अब हमें इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन बात है कि जो लीडिंग लाइन, जो पिंक लाइन एंड ब्लू लाइंस जो है आपकी, which is your fast line and your slow line, ये आपको करंट टाइम का मोमेंटम और ट्रेंड दिखाती है, राइट? और क्लाउड जो है, जो उसके पीछे रहता है, which is calculated by the leading span 1 and 2,
वो क्या दिखाता है? ट्रेंड दिखाता है. So whenever you interpret a chart on the basis of this Ichimoku system, what do? You first look at the cloud. Cloud is the shaded portion, okay, the green portion or the red portion, whichever it is basically the shaded portion. Now if you see that the cloud is above the price and price is below the cloud, it means the market may be in a downtrend. अगर ट्रेंड अप होगा तो प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर होगा. अगर प्राइस क्लाउड के नीचे है then it is a downtrend. On the other side, अगर प्राइस ऊपर है क्लाउड के तो क्लाउड का कलर ज्यादातर पॉजिटिव होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग इट कुड यूजुअली बी ग्रीन कलर. एंड ऑन द अदर साइड अगर डाउन ट्रेंड है, भाव अगर क्लाउड के नीचे है तो जो ओवरहेड क्लाउड है वो बेरिश कलर का होगा. यूजुअली इट कुड बी रेड इन कलर डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग्स. So the cloud basically does the job of showing you a longer time frame trend. That is point number 1. Point number 2, आपका ये जो दूसरे लाइन है, blue line and the pink line, they too will show you the trend, but that will be of a different time frame. आपका जो blue line है, which is the line behind the price, which is the slower line, that will be turning in the favor of the price according to medium time frame trend. और जो सबसे छोटा लाइन है, the pink line, that will be staying the closest with the price because it is just the midpoint of 9 period prices, and that will be showing you the shortest time frame momentum, right? तो जब नीचे ट्रेंड होता है, when the trend is on the downside, price सबसे नीचे होगा, as in it is shown over here. उसके पीछे आपका फास्ट लाइन होगा, फास्ट के पीछे स्लोअर लाइन होगा which is blue in color, और क्लाउड जो है वो सबसे पीछे होगा on the top, right? So each of these lines are going to act as a resistance in a downtrend. The overall picture trend will be shown by the cloud, and the medium term trend you can say would be shown by the blue line, which is the slower line. And the current momentum, is it in the is it actually moving in the current direction of trend, or is it retracing or giving you a pullback? Is it consolidating or is it trending? वो पता चलेगा with the help of your fast line, which is the pink line, which is the closest to your price, right? तो इसी तरीके से इन चार्ट्स को यूज करना है. और जो लैगिंग लाइन है उसके लिए मेरा ये मानना है कि even if you don't plot it on your chart altogether, if you skip it, you are not going to fail. It is not going to lead you to any trouble. You are not missing out anything. So just to make our things a little simpler, I would suggest कि lagging line को हम skip करें और ये leading दो line से जो cloud बनता है उस पे ध्यान दें, and the fast line and the slow line along with the cloud will suffice to make a complete trading system for us. वो वाली line को हम plot ही ना करें तो भी हम कुछ miss नहीं कर रहे, right? So moving ahead, going to the other slide. See, अगर lagging line लगाते तो ऐसे दिखती है. ये purple line जो आ गई ना, ये चली गई, ये आ गई, ये चली गई, ये आ गई. So even if you don't plot this, this is how it is going to appear if you plot it. But if you don't plot it, you are not going to miss out anything. Now look at this chart, the other chart, the next chart. यहाँ पे, this is the Bank Nifty chart. यहाँ पे you can see the trend is very clearly up. And as the price keeps moving, you will see that the slow line will also turn in the direction of the trend. The fast line will also be sloping in the direction of the trend. The price overall will remain सबसे आगे in the front most area, and the cloud, which is usually of the bullish color, in this case it is green color depending on your settings obviously, will remain much behind the price, providing a level up to which a prices can correct, and that is the level where which a price may find support in case of corrections. तो कैसे देखा जाए ये पूरे चार्ट को? आप देखिए, अगर अप ट्रेंड है और अगर डीपर करेक्शन आता है, at times you may start feeling jittery. If you have a long position or if you are thinking to go long, you may become doubtful कि इतना डिप आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 3 to 4 big red bars, तो मैं एंटर करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ. So what these clouds do is that if they are lying over here, remember that the cloud is going to be behind the price and is going to act as a support. The two lines which are formulating this cloud, the leading line 1 and 2,
उसके बीच का एरिया जितना वाइडर होगा, that much is the stronger support that the cloud is going to provide to you. जितना वो नैरो होगा, जैसे यहाँ पे है नैरो, उतना सपोर्ट कम मिलेगा, it will be a weaker support. But if it is as thick as it is over here, then the support is much stronger, right? तो अगर आपके पास ये क्लाउड पीछे ड्रॉप किया हुआ है, तो even because of the deeper retracements when the price is falling between the below the two lines of pink and blue color, even at that time आप जो है वो क्लियरली देख पाएंगे कि भले my short and medium term trend could be in trouble for a moment, भले my momentum in the current moment could be against me, लेकिन फिर भी there is a higher time frame support or a longer time frame support which is just there below behind the price in the form of the cloud, and the cloud is in my favor. The thickness of the cloud is also good enough, so the prices may find support either at the upper boundary of the cloud or somewhere inside the cloud or in the lower boundary of the cloud. तो जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता, तब तक जितना लोअर प्राइस पे मुझे एंट्री मिलेगा, मेरे लिए उतना और भी बेहतर एंट्री है, because it is giving me a safer entry at a lower price, right? And when it starts taking support over, then it resumes in the current direction of the trend. Rather, I can get a safer entry. अब एंट्री लेंगे तो कब लेंगे? When the price finds the support and it starts moving above this blue and pink line. अब ये blue and pink line में फर्क कहाँ पे पड़ेगा? तो वो मैं बताती हूँ. Pink line जो है, which is your fast line, is going to remain the closest to the price and may turn very quickly, showing you that the current momentum has changed in the favor of bulls. लेकिन अगर आप खाली pink line के basis पे enter करेंगे, and if the blue line, which is the slower line, which is the line behind, if that does not turn in your favor, if it does not point in the upper direction, say for example in this case, then वो जो shorter term का momentum था ना, वो आगे जाके die down हो सकता है. So the entry which is taken only on the basis of the pink line may sooner or later fail if the blue line does not turn soon enough to provide support to the prices. तो करना क्या है? करना ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी एंट्री के बाद धीरे धीरे करके ये ब्लू लाइन भी हमारे फेवर में आ जाए, पहली बात. दूसरी बात कि हम एंट्री ही तब करें जबकि ये पिंक लाइन नहीं बल्कि ब्लू लाइन टर्न करने लग जाए in our favor. We enter a little late in that case, but nevertheless we are taking a safer position, safer entry, right? Because not just the extreme short-term 9 period midpoint, but even the 26 period midpoint, which is the blue line, has come in our favor, right? On the other side, अगर price उसके नीचे जाता है, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि पिंक के नीचे गया तो it's a temporary mild pullback, right? लेकिन अगर blue के नीचे आया, then it's a deeper cut, it's a deeper retracement, and now we have to see to it that it finds support somewhere within the cloud or at the lower boundary of the cloud. Let's see some further charts so you'll understand it better. Now over here, if you can see, हमारे पास दोनों बाजू का ट्रेंड विजिबल है, और यहाँ पे प्राइस जब नीचे से ऊपर जाना शुरू करता है, तो यू कैन सी द बार्स. यहाँ पे मैंने बार क्यों लगाया है? बिकॉज क्लाउड के टेक्टिक्स में बहुत सारे लाइंस वैसे भी होते हैं, एंड समटाइम्स इट इज इजियर टू रीड द चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ बार चार्ट इंस्टेड ऑफ अ कैंडल चार्ट. यू नो, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आती है. तो अगर कोई लोग बार चार्ट भी यूज करते हैं, तो दिस इज हाउ इट विल लुक. अगर आप लाइन चार्ट भी यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ इफ यू रियली नो द अदर थिंग्स ऑफ द मार्केट. उससे भी पैसा बन सकता है. सी अगर लाइन चार्ट लगाते तो ऐसा होता, राइट? बार लगाएंगे तो ऐसा होगा, कैंडल होगा तो ऐसा होगा. सब कुछ चलता है, चलाने वाला चाहिए, राइट? इट इज द पर्सन बिहाइंड द सिस्टम हु इज मेकिंग द मनी एंड नॉट द सिस्टम इटसेल्फ. सो बार चार्ट पे अगर देखेंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर, फ्रॉम द एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल्स, जब बार्स जो है वो धीरे धीरे पिंक लाइन के ऊपर आएंगे, लेकिन उसी टाइम पे द स्लोअर लाइन व्हिच इज द ब्लू लाइन हैज स्टिल नॉट टर्न अप, राइट? तो वो थोड़ी खतरे वाली बात है. ये धीरे धीरे यहाँ पे तो टर्न कर लिया इसने, अगर ये नहीं करता टर्न, वी कुड हैव गॉट इनटू ट्रबल.
So there are people who will wait for a safer entry and will enter not at this level, somewhere not at this zone, but somewhere around here when the blue and the pink line both turn in the current trend direction as expected and as desired, right? So ये भी एक एंट्री होती है बाय द टाइम द प्राइसेस टेक सपोर्ट एंड टर्न ओवर हियर, तो वो भी आप एक एंट्री के जैसे ले सकते हो। अब आपको मालूम है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है या तो हायर जोन का जो रेजिस्टेंस है वो क्लाउड के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब हमें क्या देखना है, बाय तो कर लिया, हमारा नेक्स्ट काम ये है कि क्या हमारा प्राइस इस क्लाउड को पियर्स करके ऊपर जा सकता है, इज इट एबल टू पियर्स थ्रू द क्लाउड। In case if we see some trouble over here, then we might want to book out whatever little money is there. And in case if it pierces through it, then you have a very solid, stronger trend in your favor, because now slowly by slowly the prices might have pierced the cloud and are moving on the other side of the cloud. Piercing through the cloud is the first sign of a longer time frame sentiment change. अब उसको अगर आगे जाके फॉलो थ्रू भी मिलेगा तो धीरे धीरे क्लाउड का कलर भी बदल जाएगा। दिस क्लाउड which is sloping down will slowly change into a cloud which might be sloping up, and the color may also shift from red color to green color. That is a further confirmation. लेकिन अगर इतने बड़े confirmation के लिए वेट करते रहेंगे then you might be a little late in your entry. So it is not a bad idea to take your initial entry at the lower levels when both your lines of pink and blue are in your favor, and then see कि आगे जाके होता है क्या, right? So basically the interpretation would be something like this. Your current trend would be visible from the baseline, which is your slow line, which is your blue line, right? Your additional strength will be coming from your fast line or your conversion line, which is your pink line, the immediate line behind the price. And the cloud is the area between the two leading lines. Cloud will show you the longer term trend, right? And अगर वो भी आपके favor में है, तो you have all the more winning situation. And the two lines of the cloud could be converging, or it could be diverging, or it could be going parallel. Whichever the situation, जैसे जैसे converge होता है, तो you have to understand the cloud is becoming thinner. And thinner the cloud, lesser will be the support that it will be able to provide. लेकिन अगर वो diverge होती है दोनों line, means the cloud is getting thicker and thicker, means the support is stronger and stronger, and you have a very strong trend in your hands. And price above the cloud means bullish. Price below the cloud is bearish. Thickness of the cloud matters a lot. The color of the cloud also matters a lot. So this is how you basically interpret this particular system, and that is how you try to find your trades from that. देखिए यहाँ पे ये जो वाला चार्ट है, यहाँ पे क्या दिखाता है चार्ट? This shows that there is a long-term change in the sentiment, right? Long-term change in the sentiment कब visible होता है? जब price जो है वो क्लाउड के ऊपर था on the left side of the chart, धीरे धीरे करके क्लाउड के अंदर गया, क्लाउड failed to provide support and finally it started falling further lower. Entire trend was disturbed. लेकिन ये क्लाउड का कलर यहाँ पे चेंज होता है, तब तक अगर हम वेट करेंगे we could be very late for a short trade, right? So हम करते क्या है, initially when you see these lines, the pink and the blue line acting as a resistance, stopping the price from moving further, that is when you decide that okay, let me attempt a short and see what happens, right? Anyways, your short is at a higher level, so it's a safer entry. It's always safer to enter shorts from higher levels and always safer to enter longs from lower levels, right? So आगे जाके if it is working out, then the prices may pierce through the penetrate through the cloud on the downside, and the cloud may now become a resistance जैसे यहाँ पे बन गया, right? And finally the color of the cloud also changed, which confirms the change in the sentiment over a longer term, right? So this is how you interpret it. And यहाँ पे भी आप देखिए, this is a lagging span below the cloud. Lagging line हमने बाकी वाले charts में नहीं लगाई थी, and there was nothing to lose, so you can definitely skip that line. And the other four lines, the cloud and the two lines blue and pink will suffice to give you correct and complete interpretation in this trading system, right?
The thing to understand is that the slow line, which is the blue line, will take a little time to turn, while the pink line will always turn faster, right? Because it is just the 9-period midpoint and will make quicker turns compared to the blue line, which has got 26 points to calculate the midpoint from. So as per Ichimoku, where is the market expected to be turning? How do you decide it? First thing, price should be above or below the conversion in the baseline, which is the fast and the slow line, or the blue and the pink line in our examples. That is the first point. If only the fast line is changing the direction, there is a bit of risk. It is always better to wait for the slower line to be in your favor before you enter a position. And finally, your price should be moving above the cloud, and the cloud color should be changing in your favor. And thicker the cloud, the better for you. Thinner the cloud, you should be that much more alert, because thinner clouds can be penetrated or can be pierced more easily, right? So then what's the strategy over here? करेंगे तो क्या करेंगे? How will you use this system? Naturally, you will see all these things, whether the current situation on a longer term sentiment is positive or negative. You will be designing your trades according to the sentiment, and best entries will be got when the prices are just near to the cloud. And within that situation, when the slow line shifts in your favor and the fast line has already shifted earlier in your favor and it is closer to the price and it is above the slow line, that is the best situation to take a long position in. So price above the fast line above the slow line, and slow line above the cloud. This is the best of the situation for an uptrend, and the opposite in case of a short move, right? That is the strategy. Now looking at some more examples over here, see this is a situation. यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे अगर देखें तो यहाँ पे पिंक एंड ब्लू लाइंस आर टर्निंग इन द फेवर ऑफ अ बाइंग मूव, and the prices also slowly come out of the cloud and are moving on the upper side of the cloud. So first entry in this particular trade could have been somewhere over here at the first arrow, which has been shown on the left side at the bottom of the chart on the left side, right? क्यों यहाँ पे, क्यों उससे नीचे नहीं? उससे नीचे इसलिए नहीं क्योंकि उसके नीचे the pink line was in your favor, but the blue line had not yet turned in your favor. Blue line में turn कहाँ पे आया? Somewhere around here, wherever the first arrow has been marked, and that is why we waited till that time and entered over there. अगर ये entry miss हो गई है, तो क्या करना चाहिए? Which was another entry in this particular ride? Well, there was a time correction over here, if you can see. During the period when the price actually entered inside the cloud, अंदर जाने के बाद दोबारा it went above the cloud, and the lines which the fast and the slow line, the pink and the blue line, again started falling in your favor, both of them turning in the upside, and your pink line above the blue line and the blue line above the cloud. So there is another entry at the second arrow which has been marked on your chart. This is a time correction before that, which has just got over, and the current trend is resuming in the same direction, and that is where you can get your second entry. अगर ये भी मिस हो गया, ये अच्छी बात नहीं अगर इतनी एंट्रीज मिस होती है तो, because the later you enter, you are more vulnerable to an immediate retracement against you after your entry. लेकिन फिर भी for some reason अगर वो भी मिस हो गई, then where is the third entry? The third entry could have been somewhere around here, जहाँ पे there was a deeper retracement, after which the price went again above the two lines, the pink and blue lines. The two lines turned in your favor, and slowly the price again pierced through the cloud on the higher side, right? Somewhere in this zone you could have designed your entry depending on your bars or candles or whatever you look at for a final trigger, right? बहुत सी चीजें होती है, लेकिन ये सारी की सारी कैंडल्स वगैरह का भी डीप स्टडी करेंगे तो will not be able to complete in this session, and there is a lot of things that go behind every move, but यहाँ पे हम जितना भी एक घंटे में कर सकते हैं, according to that, this is the things that I can share with you. Now look at this particular diagram. This is an intraday chart. So if you are a short-term player, और अगर आप अगले दिन मार्केट में जब अपना स्टडी करके आते हैं, अगर आपको अपने चार्ट पे इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखता है, जैसा यहाँ पे ये पिछले वाले 2-3 दिन में दिखा है, this vertical lines are the day separators, right? So on day 1, 2 and 3, if this is the situation you are seeing,
And finally, on the day that you are trading in, you see this price facing a resistance right inside the cloud. You see this area जहाँ पे ये black color का arrow बनाया है, prices are holding right over there. That means longer term sentiment is yet not changing on the upper side, and that is where you can look for a short position. तो ये एरो पे एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता था. दूसरा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे भी बना सकते थे जब ये horizontal line which is the low of the prior day, the low of the day before the prior day, that particular line which is 4290 on the chart, when that line breaks, that is another entry that you could have looked for. But the cloud works so beautifully because the cloud is plotted in future also. It is the leading span which is plotted in future. So वो पहले से बना हुआ होता है, आपको पहले से अंदाजा आ जाता है कि this is where in future my price can hit a resistance or find a support, right? तो इसीलिए पहले से अगर आपका ध्यान इस क्लाउड पे था, you could have got an entry in a short trade from a higher level, a safer level, right when this candle started showing bearishness at the resistance inside the cloud, which is also red in color, right? So this is how you could have got your short trade intraday, and the move could have gone in from around, अगर आप यहाँ पे भी कहीं पे entry करते हैं somewhere around 4326 or 4330, तो भी price went lower till 4160. तो अच्छा खासा 150-200 रुपए का इंट्राडे मूव मिल सकता था. एंड दिस इज हाफ एन आवर कैंडल, तो काफी स्लो है ये चार्ट, और उसमें भी काफी टाइम था आपके पास एंट्री करने के लिए. दिस चार्ट बीइंग हायर टाइम चार्ट, सो 30 मिनट मतलब बहुत टाइम होता है एंटर करने के लिए फॉर एन इंट्राडे प्लेयर. अच्छी खासी सेफ एंट्री बनाते तो भी एक बहुत ही बढ़िया इंट्राडे फॉल आपके हाथ में आ सकता था, राइट? Moving on to the next thing, यहाँ पे आप देखिए, this is also a chart where the trend is on the downside already, and यहाँ पे जहाँ पे arrow बनाया है, price is facing a resistance right at the blue line, which is the 26 period midpoint. It does not even pull back towards the cloud, right? So when you see such resistances being played out, अगर छोटा retracement आया तो भी you have a signal, अगर ज्यादा रिट्रेसमेंट आया जैसे यहाँ पे आया था तो भी यू हैव अ लेवल. तो हर चीज में अंडर एनी एंड एवरी काइंड ऑफ अ मूव, दिस ट्रेडिंग सिस्टम विल लेट यू नो which is the level from where you can take a short or a long position. छोटा रिट्रेसमेंट है तो like ये pink and blue line will suffice, and in case of deeper pullbacks the cloud will suffice to tell you whether the trend is still same in the same direction, is there another entry in the same direction, or is it a reversal, राइट? तो यहाँ पे अगर आप ये ब्लैक एरो के पास में शॉर्ट एंट्री बनाते, both the lines keeping you in the trade, right, till a very much lower level for 2 days. It could have been a trade which you would have carried home, right? तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन के हिसाब से भी देखें तो ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से चलती है. And if you know how to interpret it, and if you can show patience enough till the system throws you a signal, then you can make very profitable trades. यहाँ पे if you see this chart, another example for us. So this is also a very nice chart. यहाँ पे base building process हो रहा है on the left side. Slowly by slowly the price is finding support inside the cloud. If you see यहाँ पे price को support मिल रहा है somewhere around here in the lower boundary of the cloud. And धीरे-धीरे करके, as the price breaks this upper boundary, which is this black horizontal line that I've drawn on the chart, you know that the trend is progressing further on the higher side. Somewhere यहाँ पे अगर आप entry करते हैं, जहाँ पे मेरा cursor आपको दिख रहा होगा, the pink and the blue line, both of them have already turned in your favor. So price above the pink line above the blue line, and blue line above the cloud. And the cloud is very close, which is a support. So you are getting an entry which is close to support, so it's a safer entry, and the color of the cloud is also in your favor. So it's a beautiful trade, taking the prices from around 6,700 to all the way 6,900 intraday. You see, अच्छा खासा रूल फॉलो करने के बाद भी अच्छी खासी मूव हाथ में आ सकती है. और ये खाली बात इसलिए नहीं है कि राइट साइड यहाँ पे बना हुआ है, so it's very easy for me to explain. हम टीवी पे जब रोज बातें करते हैं, शोज पे ट्रेड देते हैं, तब राइट साइड बना हुआ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी चीजें करके दिखाएंगे, राइट?
So ऐसा it is possible. अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. The only thing is whatever system you follow within this or any system, it's important for you to know it in totality, right? And अगर हम अगला चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देखिए this particular chart, this is also showing you very nice move. जैसे जैसे प्राइस जो है क्लाउड को पियर्स करके जाता है तो पहली एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, ये पहले ब्लैक एरो पे. Why over there? Because that is the point where the blue line started turning up. You know, I always want the slow line to remain in my favor, and I don't want to enter only on the basis of the fast line, the pink line, right? I want the slow line also to be in my favor. तो यहाँ पे पहली एंट्री बनती थी. अगर वो आपने for any reason miss कर दी, then 2 days later when the price is collapsed early in the morning, you see this hammer kind of situation in terms of candles. If you understand candles, the price over here, the moment it touched the lower end of the cloud, it immediately found support and it was immediately pulled back because of a rush of buyers, a rush of demand, right? And immediately you found a hammer over here. So this is where you recognize कि okay, this cloud उसके नीचे नहीं जा रहा भाव. The moment the price reaches over there, the buyers are saying कि okay, only this much lower and no further. So this is where I can enter a long position. And if you took that entry, you had a very beautiful trade working out for 2 long days, right? और अगर बीच में कहीं पे मिस भी हो गया होता तो जैसे जैसे डिप्स आती है जो ये पिंक लाइन पे ब्लू लाइन पे या तो क्लाउड पे सपोर्ट फाइंड करती है, then you have another chance to enter, right? If you're, or maybe if you're an intraday player and you booked out on day 1, this was another entry on day 2, right? So this is how you look at the chart. This is how you interpret the price action with respect to the Ichimoku system, and this is how you can find your profitable moves. Now listen into this trade. अभी थोड़े दिन पहले LIC का रिजल्ट आया ना, LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रही हूँ. तो उस टाइम पे जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैंने टेलीविजन पे शॉर्ट ट्रेड दिया था LIC में, और उसके बाद ये रिजल्ट की वजह से गैप डाउन भी ज्यादा हुआ. तो मुझे खुलने के बाद भी पूछा गया था कि अब आप क्या सजेस्ट करते हैं आफ्टर ऑल दिस गैप डाउन, वुड यू स्टिल सजेस्ट टू कीप योर शॉर्ट ट्रेड ऑन, और आपको अब लग रहा है कि ये खत्म करना चाहिए, बहुत ज्यादा गिर गया. एंड आई सेड कि जो इंट्राडे प्लेयर्स है उनको 500 तक जाएगा, ये तब 515 या 20 के आसपास था. मैं कहा और नीचे जाएगा, 500 तक जाएगा, सो इंट्राडे प्लेयर्स वहां पे थोड़ा बुकआउट के हिसाब से सोच सकते हैं. फिर 2 दिन बाद उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अब क्या कहना है आपका, ये और भी फर्दर डाउन चला गया, तो जो कैरी करे हुए पोजीशंस दे ऑलरेडी मेकिंग मनी, तो अब क्या करना चाहिए. एंड आई शो यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द चार्ट. ये इचिमोकू सिस्टम कैसे ब्यूटीफुली वर्क कर सकती है ऐसे मल्टी डे पोजीशन के लिए, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, राइट? जस्ट लिसन इनटू दिस. जी, गुड मॉर्निंग. सॉरी, और मेरी नजर LIC हाउसिंग पे है, और LIC हाउसिंग पिछले 2-3 दिनों से 530 का लेवल दिखा डिफिकल्टी फेस कर रहा है. तो ऊपर से रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें हम एक करेक्टिव मूव देने को शामिल कर सकता हूँ, स्पेशली अगर ये आज भी दोबारा 530 के ऊपर जाने के टाइम रेजिस्टेंस फेस करेगा और फेल होगा, then we will increase the probability कि ये 530 होएगा on the lower side. और उसी हिसाब से हमने 520 के ऊपर फ्यूचर्स में ऐसा सजेस्ट करा है. और शॉर्ट ट्रेड के लिए टारगेट्स में पहले 530 अगर निकाल देगा तो 518, 512 और उसके बाद 505 की तरफ भी हो जा सकता है. हमेशा की तरह सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है जब आप बिल्कुल अकेले खरीदने होता है, और दुनिया के लोगों को एक तरफ और रशिया की शॉप को एक तरफ LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बिल्कुल की है आपको देखने नहीं है. तो भी वो लेंगे, उसके बाद बना कर ये चार्ट चेक पूरा कर दिया है. बहुत आभार कि अब जो है इसमें से उनका जो टॉप पिक था वो था सिर्फ ऑन LIC हाउसिंग फाइनेंस, और ऐसे में सबसे बड़ा यूजर आज आपको फिलहाल बिल्कुल
कम गैप के साथ मिलेगा तो बेटर फ्यूचर्स हमें 500 तक का लेवल मैक्सिमम रखना चाहिए, फिर एक सपोर्ट दिखना चाहिए, तो लेकिन जो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है तो, और वो ये लॉन्ग टारगेट की बात करूं तो संभावना है जी मेरा ये मानना है कि ऐसे तो ट्रेड करके करीब करीब 495 के आसपास ले लेना चाहिए, तो 480 ले रखेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, और ये जा सकता है 460 और 450 का, तो 460 और 50 के बीच में भी सपोर्ट लेना तो नजर आएगा, क्योंकि आगे बढ़े जाएंगे तो काफी मजा आना चाहिए। Now see 460 और 50 के बीच में अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो तब निकल जाना चाहिए, राइट? तो लुक एट द क्लाउड सिस्टम, हाउ ब्यूटीफुल इट इज वर्क। दिस वाज द डे, मैं ये कह रही थी कि 530 वो 2 दिन से निकालना मुश्किल हो रही है उसको, तो आज भी अगर वो वहां से रुका, नहीं निकाल रहा जिसको, तो बड़ा फॉल आएगा। ओके, तो ये दिस वाज डे 1, ओके, दिस इज डे 1। और यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद भी जब उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं, ये अभी तो 518-20 के आसपास है, ये इंट्राडे के हिसाब से जाएगा, मल्टी डे के हिसाब से भी जा सकता है 500 की तरफ, राइट? तो उसने उसी दिन डे 1 को 494 टच कर लिया, डू यू सी दैट? And now when you are deep into profits on day 1, you have a cushion of profits to protect you against a certain pullback which could have come through a gap up on the next morning, but you can still carry the short because you have a buffer of profits which is there to protect you. तो ऐसे में अगर आप कवर कैरी करते हैं, होम पे लेके जाते हैं घर पे पोजीशन को, तो डे 1, डे 2 और डे 3 पे जब उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि अब क्या कहते हैं आप, अब 475 पे है, करीब करीब यहाँ पे था भाव, जब उन्होंने मुझसे पूछा ना, तो मैंने फिर भी कहा कि 460 और 50 के बीच में जाएगा, दैट इज द टाइम टू कवर। एंड इफ यू सी राइट, यहाँ पे 60 के करीब, दिस इज 60, 58 के आसपास उसने सपोर्ट लिया, एंड उसी के बाद ये प्राइस जो है वो क्लाउड के दूसरी बाजू पियर्स करा। नाउ यू सी उसके पहले पुलबैक बहुत सारे आए थे, ये लाइन के ऊपर भी भाव निकल गया था बहुत बार, लेकिन अगर एक क्लाउड पीछे बैठा है जो मुझे पता है कि इट इज रेड इन कलर एंड इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, then I know okay there is still a chance for the short trade to work in my favor, no matter the price may have pierced the blue line, it may have penetrated the pink line, लेकिन फिर भी मैं अपने शॉर्ट को कवर करने की बजाय कैरी कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आता है ऐसे सिस्टम से जहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सेंटीमेंट, मोमेंटम, ट्रेंड सब कुछ एक इंडिकेटर में बना हुआ हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, और इसमें ये क्लाउड ने कंटिन्यूअसली बताया है कि इट इज देयर लाइंग ऑन द ओवरहेड रेजिस्टेंस लेवल एंड इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर शॉर्ट पोजीशंस, एंड राइट एट 460 जहां पे हमने बोला था कि इसको कवर करना चाहिए, उसके बाद इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम penetrating on the other side of the cloud. So you see, before seeing the right side, it is actually possible to make such calculated calls. तो ये चीज क्लाउड के सिस्टम से अगर देखते तो this is how you would use it and this is how you would interpret it and play it for multiple days. मिस्टेक्स कौन सी है जो अवॉइड करनी चाहिए, विच आर द थिंग्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए? ये होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि सीख के करना जरूरी है हर चीज, और सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये 1 घंटा तो दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रश अप सेशन, लेकिन बहुत सी चीजें हैं मार्केट में सोचने समझने के लिए, और अनविलिंगनेस टू लर्न कैन कॉस्ट यू वेरी हैवी, सो बी विलिंग टू लर्न, बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बिफोर यू इन्वेस्ट इन मार्केट, एंड जो चीप तरीके मत ढूंढने की कोशिश करिए कि इधर से ढाल लो उधर से चाल लो। ट्रेडिंग इज नॉट अ साइमन सेज गेम, जैसे बचपन में कहते थे ना, साइमन सेज स्टैंड तो एवरीबॉडी विल स्टैंड, साइमन सेज सिट तो सब लोग बैठ जाएंगे। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट रीचिंग अ कंसेंसस, इट इज अबाउट हैविंग योर ओन strategy in place which will tell you what to do। अगर आप किसी से एडवाइजरी भी करते हैं ना, you know, तो एडवाइजरी या कोई कॉल आपको कोई फाइंड करके देता है, that's just 50% of the job, what about the execution, it is still in your hands। तो वो चीज करने के लिए जानना जरूरी है, और जैसे कहते हैं ना, सस्ता हमेशा महंगा पड़ता है, तो हमेशा एक हार्ड तरीका, एक हार्ड रास्ता जो होता है उसको भी अगर अपना ले एक बारी, वो वंस अगर मेहनत कर ले चीजों को समझने सीखने की, तो बाद में
बाद में बहुत फायदे होते हैं। हम लोग यहाँ पे स्पाइडर के प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें करें, स्पाइडर इज अ पेड प्लेटफॉर्म, राइट, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि हमें कितने फायदे होते हैं इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर को यूज करने से, राइट। तो कॉस्ट वॉस्ट तो कहाँ निकल जाती है पता ही नहीं चलता। एक बारी अपने आप के पीछे थोड़ा अटेंशन, एनर्जी, टाइम स्पेंड करें और लर्न करके काम करें, ताकि you know that you don't repeat the mistakes. If you have done mistakes in your past, you don't leave a lot of money on the table for the next time, you don't overstay your welcome, and you adopt the lessons so that you perform better. कल को कोई आपको भी पूछता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, तो यू कैन से मेरे पास मेथड, right? So with this, I think I have completed my sharing, whatever I had to share from my side, and you are definitely prepared with this kind of know-how to explore further in the financial jungle. Learning is a lifelong process, और ये तो एक हमारी शुरुआत है। उम्मीद करेंगे आगे आपसे बार बार भी मिले और आप हमारे टच में भी रहेंगे, तो हम शेयरिंग्स अपनी जो है आपके साथ शेयर, लर्निंग्स अपनी जो है वो शेयर करते रहेंगे। एंड as you already know, you can remain in touch with me over these details, and we can all learn and grow together in the times ahead. With this, if you have any questions, then I'd like to take that. Okay, fine. So thank you for having me over here. It was nice sharing this learnings with you all, and I look forward to such associations with you people more often.